So these are the two resonating structure, and the resonance hybrid that you're going to get is CH3 single bond oxygen, single bond CH2. There is a partial double bond character between oxygen and CH2, and both of these are having delta positive and delta positive charge. Oxygen is having neutral, oxygen is positive, carbon is positive, carbon is neutral. Okay. Another case that you can see is in amines. If you have CH3 bonded to nitrogen, this is bonded with one hydrogen and a lone pair electron, further bonded with CH2 positive. So this is also resonance stabilized like this. CH3 nitrogen with a double bond CH2, single bond hydrogen, and a positive charge here like this. The resonance hybrid for this is going to be CH3 nitrogen CH2 hydrogen, delta positive here and delta positive in this carbon atom also. Now, if you have any carbonyl carbon, aldehyde or ketone, it can also have a resonance structure. If you have C double bond O, then in this case, we have the structure CS3, C double bond O, CS3. Now, when this pi bond is going to go towards oxygen atom, then you will get CS3, CCH3, single bond oxygen, oxygen with a negative charge and carbon with a positive charge. So these are also what? These are also resonating structures, and you have the resonance hybrid as carbon CH3 single bond oxygen dotted line. That is means it is partial double bond character, delta negative at oxygen and delta positive at carbon. Please write this down. Done, everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Right, next. Contribution of different resonating structures. Please write. Contribution of different resonating structure. We all know that the resonance hybrid structure is made by it is made by different resonating structure. All the resonating structure, they have some contribution towards the resonance hybrid, but the contribution of each resonating structure is not equal. Okay? So what are the factors that depend that what are the factors that cause the different types of contribution for different resonating structure? We will look at that first. But first of all, you please write here number 1 point that resonating structures contributes to resonance hybrid structure, but contribution of
each resonating structure is not same. Next point. More stable resonating structure contributes more and is more dominant. So what are the different factors that affect the stability of resonating structures? Please write. Rules for stability of the resonating structure. Write the number one rule. First is more number of bonds. More number of bonds. That means more stable. Okay, that means more number of bonds का मतलब क्या हुआ? If you have octet complete, if the octet is complete, then it is going to be one, then it is going to be more stable. Second is the neutral resonating structures will be more stable than charged one. Okay, neutral obviously, because if you don't have any charge, that means it is more stable. Third is if you have negative charge, the negative charge is stable at more electronegative element. More electronegative element. Fourth, ठीक है, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज कहां पे होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, सो पॉजिटिव चार्ज शुड बी इन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. राइट. नेक्स्ट, like charges should be as far as possible, because like charges, they repel each other. So if you bring them near, it is going to cause repulsion, and repulsion causes destability. It reduces the stability. And unlike charges should be near for more stability. Okay, so these are the 4 rules. Okay, and you are going to check the stability in this order. ठीक है, सबसे पहले देखिएगा सबसे ज्यादा बॉन्ड किसके पास है. If the number of bonds are same, after you have checked the number of bonds, then you see if you are having this different number of bonds, so जिसमें ज्यादा bond है, that is more stable. If the number of bond is equal, then see if it is neutral or charged. If both of them are neutral or both of them are charged, you cannot decide after neutral or charge. Then you look at the negative charge, where it is present. It is present in the more electronegative element or less electronegative element. If that is also same for the structures that is given, then you look at the charges. If you have like charges, are they near? And if you have unlike charges, are they far away? Okay, so look at those things and you will check for the stability. Like charges should be as far as possible, and unlike charges should be near for more stability. Write this 4 down. Write this 4 rules. And write a question. Arrange the following resonating structure in order of their stability.
Done everyone? Yes or no? Please tell me. All of you wrote the rules. Yes, sir. Okay. Now, write the A structure. Okay, so इसी का resonating structure क्या होगा? Let us suppose I break this pi bond in this order. CO negative and carbon gets positive and OH. C में C में what I did? I have lone pairs here. ठीक है, तो lone pairs and carbon atom के बीच में हमने bond बना दिया. So I have H, C, O negative, positive charge यानी. Let's suppose we have double bond O and H, and there is a positive charge here. Right, the D structure. In D structure, what I did, I broke the pi bond in such a way that carbon gets negative and oxygen gets positive. So I have H, C, O positive, carbon negative, and you have OH. So first of all, you are going to look at the number of bonds. Tell me how many bonds can you see in this structure, A structure? How many bonds can you see in the structure? 5. 5. What about this one? Please answer, guys. What happened? Bonds, number of bonds answer कर सकते हैं ना सभी कोई? हाँ, देवांगी, इरम, जानिया, तारीफ, अब्दुल्ला, all of you please answer. What about this one? C structure is having how many number of bonds? 5. And this D structure is having 4. 4. Okay. So obviously, which is having highest number of bonds? A and C. So I will compare first of all A and C. If I look at A and C, what is the next criteria after the number of bonds? What do we look at? What should we look at? Tell me. What should we look at? What is the second rule? What is the second rule? अरे, second rule आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं. What is the second rule? Neutral is more stable, right? हाँ, तब बताइए. In A and C, this is neutral or charged. Tell me. A is neutral. B क्या है? Charged है, neutral है? Charged. C is what? Tell me, guys. C क्या है? C is charged or neutral? देख के बताइए. अरे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बस उतना देख के बताइए जल्दी से. Charged. Neutral, charged, and D structure is also Charged. charged. So on the basis of the first two rules only, we can say A is most stable. Can I say that? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. A is most stable. ठीक है. उसके बाद कौन सा आ जाएगा? उसके बाद we will have C, correct? Because C is also having 5. So A and C. Now we have to look at B and D. Now what is this? Now B is having 4 bonds. D is having 4 bonds. B is also charged. D is also charged. Now what is the next rule? Tell me, guys. We have to look where is the charge, right? So tell me. हाँ, इसमें तभी हम लोग नहीं लिखेंगे. We have also already done A and we have already done C. So in the B case, tell me where is the negative charge? In the B case, where is the negative charge? Oxygen. And in D, where is the negative charge? Carbon. तो बताइए, which is more electronegative, oxygen or carbon? Oxygen. Oxygen is more electronegative. That is why this will be more stable. So after C, we will have B, and after B, we will have D. Is that clear? Yes or no? Please tell me. Yes. Nabil Ahmed, can you hear me? Nabil Ahmed. No, Nabil, you can't hear me. Nabil is on another device also, I think. Okay. Okay, so what will be the order? A, C, B, and then D. Write this down.
Okay, please write this down. So which is the major contributor? A is the major contributor. Baki B, C, and D, all of these are what? All of these are not major contributor. These are minor contributor towards the resonance hybrid structure. Okay. B mein what is the problem? First of all, there is charge separation here. Okay. So we have incomplete octet on carbon. That is why it is unstable. Incomplete octet. Okay. What about C? Why it is not very nice? Because we have charge separation. है ना? Positive negative charge को नजदीक रहना चाहिए. So here we have charge separation. And यहाँ पे it is not possible. ये तो हो ही नहीं सकता because positive on oxygen is unstable. Okay, so they can also ask you regarding these resonating structure, and they will ask you why these are not major contributors towards the resonance hybrid. So you will point out these things. If they have given you B, then you will say that the carbon is incomplete octet. In the C, we have charge separation, large charge separation. And in the D case, we are having positive charge on oxygen, which is unstable. Done everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay, right, next. Mesomeric effect or resonance effect. Please write. Shifting or displacement of pi or lone pair electrons. Shifting or displacement pi or lone pair electrons towards or away from a substituent group. Okay, so see, for example, if you have CH2 double bond CH, single bond OH. Now, in the resonating structure, you are going to move the electrons from oxygen atom like this and like this. So as you can see, the oxygen atom is giving electrons towards the carbon atom. So this is electron donation. Okay, so this is electron donation. From OH group. And if there is electron donation towards the alkyl chain or the carbon chain, then it is known as plus M effect or plus R effect. ठीक है, दोनों में एक ही बात है, mesomeric effect or resonance effect. But if you have something like this, CH2, single bond CH, single bond, sorry, CH2 double bond CH, single bond CH, and double bond O. In this case, oxygen atom is going to take the electron like this. Further, this is moving like this. So what is happening? The electron withdrawal. Electron withdrawal by CHO group. This is known as minus M or minus R effect. And these type of groups which have plus M or plus R, these are known as EDG, electron donating group, or electron releasing group, ERG. And electron withdrawing groups are known as EWG, electron withdrawing groups. The electrons which show minus M or minus R, they are known as electron withdrawing group. The one which show plus M or plus R, they are known as electron donating group or electron releasing group.
ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव दिस केस CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH2. Now in this case, CH2 single bond CH, double bond CH, single bond CH2. Here you have negative charge and here you have positive charge. Now in this case, there is no electron donation or there is no electron withdrawal because electrons निकल के कहाँ जा रहे हैं, कार्बन के पास ही जा रहे हैं, और कहाँ से निकल रहे हैं, कार्बन के पास से निकल रहे हैं. So this is resonance. Okay, that is why resonance and resonance effect are different. Resonance and mesomeric effect are different. How it is different? This resonance is happening here. We can say that resonance is happening here, but it is not mesomeric effect or resonance effect. Resonance. This is resonance, but not plus R or minus R. Okay. So each and every mesomeric effect are resonance. Okay, they contain the phenomena of resonance, but not all resonance effect are mesomeric effect. Okay, so please write all mesomeric effect have resonance, but all resonance do not have mesomeric effect. Done everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Right, next. Identify कैसे करेंगे? Which is having mesomeric effect or which is having mesomeric effect or which is having, sorry, which is having plus M or minus M effect. So first of all, there is a very important term that is known as key atom. ठीक है? There is a definition जिसको आप लोग अगर याद रखिए तो बेहतर है. Key atom ऐसा कुछ you will not see in notebooks or textbooks and all, but key atom is a very important concept to understand plus M and minus M. Click here. What is key atom? The atom of functional group that is directly attached to the main chain. जो भी अल्काइल चेन है आपके पास, उसमें जो भी अल्काइल चेन है, उसमें से जो कार्बन, okay, we have a carbon atom in the functional group that will be attached on the main chain. That atom of functional group is going to be known as key atom. For example, please write a question. Identify the key atom in following. तो की एटम के लिए पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है ना? फंक्शनल ग्रुप में ही की एटम होगा. If you don't know what is a functional group, if you cannot identify what is a functional group, then you will not be able to identify the key atom also. Okay, so please see, for example, A, like this. Now, what is the functional group? First of all, identify that. Let me switch the view. Yeah. Now, this OH is the functional group here. Okay. Now, in OH, what is attached directly to the carbon chain? This is the oxygen atom which is directly attached. This oxygen atom is attached to this carbon atom, ठीक है, which is in the alkyl chain. ये कार्बन नहीं होता है. जो लोग अभी तक नहीं जान समझ में आ रहा है जिनको, प्लीज देख लीजिए. This is not a carbon atom. Okay, that is just a end of bond. Right, B case. डबल बॉन्ड O and OH. अब यहाँ पे ना लोगों को गलती हो जाती है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने में. Identify the functional group. What is the functional group? COOH is the functional group, na? Carboxylic acid. This is the functional group, and this functional group is attached to the main chain via this carbon atom. So this carbon atom is the key atom. Right? C.
Now tell me 1, 2, 3. Which is the key atom here? Which is the key atom here? 1, 2, or 3? Yes, Fahad, correct. What about this D case? What is the key atom here? Yes, correct, Fahad. Tell me in the E case, what is the key atom? Please identify first, उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है? First of all, identify. बाकी लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? ध्यान दीजिए भाई, इतना आसानी से यहाँ पे पढ़िए और बताइए आंसर. In 2 cases, I have given you the examples also. Please answer, guys. Three सही है, 2 सही है, 4th. Now, देवांगी, first of all, identify the functional group. Okay. Functional group में ही key atom होगा. Functional group से बाहर key atom नहीं होगा. So identify the functional group first of all. In the E case, identify the functional group. Devangi. What is the functional group, Devangi? Tell me. NH2 third. हाँ, समझ में आई बात? जिन लोगों को नहीं दिख रहा है भाई, देखिए प्लीज, ध्यान दीजिए, ये सारे सवाल होने चाहिए. दिस इज द थर्ड कार्बन एटम. फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. अब जिन लोगों को फंक्शनल ग्रुप देखने नहीं आ रहा है, वो लोग प्लीज रिवाइज करना चालू करें. ठीक है, पढ़ाई चालू कीजिए आप लोग, जिन लोगों को फंक्शनल ग्रुप देखना नहीं आ रहा है. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप and the second carbon is attached to the carbene chain. The functional group in NH2 is nitrogen and the 2 hydrogens. So in nitrogen and 2 hydrogen which is connected to the main chain, the nitrogen is connected to the main chain. Okay, so this is the key atom here. Now how to identify plus M or minus M? Please write. Please write. If the key atom in functional group is attached to more electronegative element via multiple bond, then it is minus M. ठीक है, then it is going to be minus M. Now first of all you will identify whether it is minus M है या नहीं है. अगर minus M नहीं है, then you are going to see. If not minus M, then it will be plus M if it contains, if the key atom contains lone pair electron. ठीक है, अगर माइनस एम नहीं है तो प्लस एम होगा. कब होगा प्लस एम? जब उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो.
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आई एम जस्ट नॉट राइटिंग नेगेटिव चार्ज, लेकिन जहां पे भी लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज का मतलब ही लोन पेयर, देयर इज एक्स्ट्रा लोन पेयर देयर। चलिए राइट नेक्स्ट। Identifying plus m and minus m groups in following. ठीक है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंजीन, इस वजह से हमने बेंजीन लिखा है यहाँ पे। प्लीज राइट, इफ यू हैव OH or you have NH2, you can have CHO, you can have COOH, you can have CONH2, you can have COCl. What else you can have? You can have OCS3. What else you can have? You can have CH2 negative. You can have an amide group like this. You can also have COCS3. What else you can have? You can have oxygen followed by C double bond OCS3. Or what else you can have? और क्या हो सकता है आपके पास? एक केस ले लीजिए CH2 पॉजिटिव, दिस वन आई विल एक्सप्लेन। आप लोग रिंग बना लीजिए या फिर डबल बॉन्ड्स बना लीजिए। आई विल मेक द डबल बॉन्ड्स बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन। हमने लोन पेयर्स कहाँ पे है नहीं है वो नहीं दिखाया, आप लोगों को पता लगाना कहाँ पे लोन पेयर है कहाँ पे डबल बॉन्ड है। इफ यू नो दी structure of functional group, then only you will be able to understand where you have lone pair electrons and where you don't have lone pair electrons, and where you are going to have double bond. Identify the key atom, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। आई विल, कितने हैं स्ट्रक्चर्स यहाँ पे? यू विल हैव 1 2 3 4 5 6, you have 12 structures। चलिए, I will give you like 10 minutes, I think it is enough, है ना। 30 सेकंड से ज्यादा क्या लगाइएगा आप एक स्ट्रक्चर में? 30 सेकंड से ज्यादा अगर आपका लग रहा है तो आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना, मूव फॉरवर्ड।
Please send your answers if you are done. Done, guys? Hi, Anna. Send the answers. It's been 10 minutes. Whatever you have done, please send the answers. Okay, Devangi. First one correct, second one correct, third आपने नहीं किया, fourth नहीं किया, fifth नहीं किया, sixth नहीं किया, seventh ठीक है, eighth ठीक है, ठीक है. Okay, whatever you have done is correct, Devangi. But जैसे for example you have CHO, COOH, try to write the complete structure and you will understand कि क्या हो रहा है, whether it is plus M or minus M there. Oh, Devangi है ही नहीं क्लास में. Okay, so those guys, Devangi आपने message किया है. All of those are correct. Whatever you have done. Try to write the complete structure of CHO, COOH, CONH2, COCl, COCH3. If you are going to write the structure, the complete structure, then you're going to understand whether it is going to be plus M or minus M. What about others? हाँ, इरम, फहद, तारीफ, अब्दुल्ला. एक भी नहीं हुआ. अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जल्दी बोलिए, एक भी नहीं हुआ. Abdullah, can you please turn your mic on? Tarif, what about you? Iram, आपसे एक भी हुआ? Yes, Iram, tell me. Iram, can you not hear me? Yes, sir. क्या हुआ? एक भी हुआ आपसे? नहीं हुआ? जल्दी बताइए ना, इतना टाइम क्यों लेती हैं आप लोग? हुआ. हाँ, टेल मी. Sir, I'm not sure. अरे यार, नॉट श्योर. अरे एग्जाम में आप मार्क्स काट लेंगे, हम आपका हाथ काट लेंगे, गलत हो जाएगा. क्या करेंगे हम आपको? नॉट श्योर बताइए ना. नॉट श्योर ही तो है, सीखने के लिए तो आए हैं. आप पढ़ाने आई हैं क्या? हाँ इरम, पढ़ाना है आपको? जी. No. आपको नहीं ना, पढ़ाना नहीं है ना. पढ़ाना होता तो आप श्योर होती. पढ़ाना नहीं है तो अभी आप अनश्योर ही रहिएगा. बताइए. फर्स्ट वाले में हम यहाँ पे ट्राई करने के लिए बोल रहे थे आप लोगों को, ठीक है ना. गलत सही अभी थोड़ी ना, टेस्ट थोड़ी ना हो रहा है जी. पहले वाले में बताइए. Minus M. अच्छा, ऑक्सीजन आटम के पास लोन पेयर नहीं है या है? पहले बताइए की आटम क्या, कौन सा है यहाँ पे? व्हाट इज द की आटम हियर? की आटम कौन सा है, जल्दी बताइए. फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इरम? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? OH. OH में की आटम कौन सा है? OH में की आटम कौन सा है? O. Is O connected to any electronegative element?
इज O कनेक्टेड टू, O किससे कनेक्टेड है बताइए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या नहीं है? देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जब बात आती है तो इट विल बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, ठीक है ना? यही तीनों के क्या होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। So tell me, is oxygen connected to any electronegative element? Eram, yes or no? यस। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अरे ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है, ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड है बताइए? हाइड्रोजन से नहीं है ना? बात समझ में आई? फर्क समझ में आया? या ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द की एटम, आई एम आस्किंग अबाउट द एटम दैट इज बॉन्डेड टू की एटम. If the key atom is bonded to a more electronegative element via multiple bond, then it is going to be -m. So यहाँ पे अच्छा, अब जब ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड होते हैं, so it has two lone pairs. अब ये चीज आपको आनी चाहिए. क्यों आनी चाहिए? बिकॉज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ पे बॉन्ड से, दो यहाँ पे बॉन्ड से, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर. कुल मिला के कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है ना? ये लोन पेयर है कहाँ पे, नहीं कहाँ पे, वो आप लोग को पता होना चाहिए. नाउ once we are done with structure of shapes and structure of molecules, so if it is having lone pair electron, key atom पे lone pair electron है तो बताइए प्लस m या माइनस m? अब बताइए, जल्दी बताइए, यहाँ पे बोलिए. व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? तारीफ अच्छा एक सेकंड, तारीफ एंड अब्दुल्ला, यू कांट हियर मी? फहद, व्हाट अबाउट यू, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, आपसे भी एक भी नहीं हुआ, आपने आंसर नहीं भेजा. यस फहद, Sir, हुआ था. अच्छा हुआ तो फिर भेजिए आंसर. ये बताइए सेकंड वाले में, बताइए क्या होगा? प्लस एम माइनस एम? यस फहद, प्लस एम और माइनस एम? तो मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ. टेक्स्ट कीजिएगा आप. अच्छा ठीक है, चलिए टेक्स्ट कीजिए. इरम, आपका ख्याल, क्या ख्याल है इसमें? प्लस एम और माइनस एम? यस इरम, प्लस एम. plus m. Why? Because what is the functional group? Functional group is NH2. What is the key atom? Nitrogen is the key atom. Is nitrogen connected to any electronegative element via multiple bond? No, it is only connected to hydrogen, right? And this nitrogen का structure इस तरह यहाँ पे क्या होगा NH2 में? This will be 2 hydrogens. 1 2 3, 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 7 और 8, एक लोन पेयर है यहाँ पे, so it will be plus m. What about this one? ये देखिए, ये आप लोगों को नजर ही नहीं आया. CHO क्या होता है? It is carbon. कार्बन के पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, राइट? सो कार्बन हैज अ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज डबल बॉन्ड हो ना. ये तो आप लोग को आना चाहिए. सी डबल बॉन्ड होता है. दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप CHO. व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? टेल मी गाइस. CHO इज द फंक्शनल ग्रुप, यस और नो? Yes, sir. व्हाट इज द की एटम हियर? व्हाट इज द की एटम हियर? Carbon. कार्बन. नाउ इज कार्बन कनेक्टेड टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाया मल्टीपल बॉन्ड, यस और नो? कार्बन, इरम बताइए. इरम विल टेल मी. यस. हाँ, किससे कनेक्टेड है ये? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन विद मल्टीपल बॉन्ड, सो दिस विल बी -m. ठीक है. अब उसी तरह से ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू हैव C डबल बॉन्ड, सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी -m, दिस इज आल्सो -m, दिस इज आल्सो -m, बिकॉज़ सब में क्या है? यू हैव अ C डबल बॉन्ड O एंड दिस C इज फर्दर कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग, दैट इज दिस की एटम इज कनेक्टेड टू more electronegative element via multiple bond. Now the case of phenol, this is OH, and OCH3 is very similar because here you are having lone pair electron, and this is also going to be plus M. CH2 negative, so obviously it is plus M because key atom is having negative charge. In this case, nitrogen is connected to यहाँ पे carbon से connected है, ठीक है? Please see here, the key atom is nitrogen. Nitrogen is connected to not oxygen, it is connected to carbon. Okay, now it is connected to carbon, which is less electronegative element. It is not oxygen. Also, it is connected via single bond. और nitrogen, तो यानी कि -m तो नहीं है, right? It is not -m. Why? Because nitrogen is not connected to any electronegative element via multiple bond. That means it is plus m because it has a lone pair electron. जैसे ही CO दिखा आपको -m, because यहाँ पे क्या होगा? This will be carbon double bond O and CH3. Ketonic group है. This is acetophenol. यहाँ पे you have oxygen atom. Oxygen atom is connected to carbon. That means it is not connected to any electronegative element via multiple bond. ठीक है? So this is my function. This is my key atom not connected to. That means -m नहीं है. तो lone pair है यहाँ पे, हाँ, because it is oxygen and with 2 bonds. So it is going to be plus m. Now what about this? In this case, the key atom, that is carbon, it is having a positive charge. तो positive charge में देखिए electron इस तरह से move करता है. So it is going to be -m. Okay, it is going to be -m. Please write this down.
ठीक है ना। अब जिन लोगों का दिमाग ना चले वो लोग याद कर लें। आई एम गोइंग टू राइट ऑल दिस ग्रुप्स, राइट? सो प्लीज राइट हियर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। कौन कौन से होंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स? आर if you have CHO, if you have COOH, if you have C double bond O, जैसे कि आपका यहाँ पे था, this one C double bond O, it is connected to two groups, ठीक है? And then you have what else you can have? You can have CONH2, you can have COCH3, you can have COCl. हाँ, और केसेस हो सकते थे, जैसे मान लीजिए आपके पास you have C triple bond N, nitrile group है जैसे, okay? So this nitrile key atom is carbon atom connected to nitrogen with a multiple bond. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? CN. Similarly आपके पास NO2 group होता है, that is also electron withdrawing because nitrogen double bond oxygen here and single bond oxygen. So nitrogen is the key atom connected to oxygen via multiple bond. So you'll have NO2 also as the electron withdrawing group. EWG का मतलब क्या हुआ? -M, ठीक है? और प्लस M ग्रुप में क्या क्या आ जाएंगे? प्लस M में आपके पास आएगा OH, NH2, OR, ठीक है, एनी ईथर, और क्या आ जाएगा आपके पास? OCOCH3, है ना? OCOCH3 या फिर इन जनरल OCOR लिख दीजिए आप, ठीक है? You can have NH COR. What else we can have? अब इस नाइट्रोजन में आपके पास और केस हो सकता है, if you have NHR, एक अल्काइल ग्रुप लगा हो, या फिर you have NR2, ठीक है? So all of these are having lone pair electrons, इसी वजह से these are going to be electron donating groups. चलिए इतना लिखिए। Done everyone? Yes or no? Please tell me. Is everyone done? Yes, sir. Right, next. अच्छा, we have seen resonance effect ना, तो resonance effect में आप लोगों ने कुछ चीजें देखी होगी बेंजीन रिंग के लिए, that I just wanted to show you guys. देखिए इस केस में बताइए तो क्या हो रहा है? When you have phenol, in this case, what is this? Plus M or minus M? It is plus M or minus M? Tell me. Plus M, है ना? अच्छा, plus M से क्या हो रहा है? You are increasing the electron density at ortho and para position. Can you see that? Yes or no? Please tell me. Plus M में क्या हो रहा है? The electron density in the benzene ring की अगर हम बात करें, in benzene ring the electron density is increasing at ortho and para position. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. Can all of you see that? Yes, sir. अरे हाँ ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, right. See next. What is this? Plus M or minus M? अच्छा, उससे अलावा एक सेकंड, एक नाइट्रो वाला केस था, उसको देख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, नाइट्रो वाला केस। टेल मी, प्लस M और माइनस M, प्लस M और माइनस M इन दिस केस। डेल्टा पॉजिटिव होगा यहाँ पे, या प्लस M और माइनस M हियर? Minus.
minus m. Minus m में क्या हो रहा है देखिए, you are having a decrease in electron density. The ortho and the para position are getting delta positive. That means there is a decrease in electron density at the ortho and para position. So mesomeric effect can only have effect on ortho and para position. Okay. So if you have plus m effect, it is going to increase the electron density at ortho and para. And if you have minus m effect, it is going to decrease the electron density at ortho and para position. But it does not have any influence on the meta position. Okay. So I'm going to write the conclusion here because you already have the resonating structures. Please write. Write a note, first point. Mesomeric effect does not have any influence on the meta position of benzene ring mesomeric effect only influences the electron density at ortho and para position. When plus M group is present, the electron density at ortho and para position increases. When minus M group is present, the electron density at meta position, at ortho and para position decreases. Done, everyone? Yes, sir. Okay, right, next. Compare the stability in following. So you have a carbocation like this, CH2 positive here. Okay. This is A structure. The B structure, you have
CH2 positive and OH here. Sorry. नहीं बनेगा ये बेंजीन। CH2 पॉजिटिव, अच्छा यहाँ पे आपके पास है NO2, राइट द D स्ट्रक्चर, CH2 positive, here you have OH in the meta position. ठीक है? So if you have been given to compare the stability of this type of carbocations, then how are you going to do? First of all, you can see that benzene ring and CH2 is what? Benzene ring with CH2 positive is common in all of them. So if something is common, that is not going to affect the stability, right? Whatever is different, that is going to affect the stability. Whatever is different, that is going to affect the stability. So in the A structure, we don't have any substituent. The substituent in the B position is what? This is OH, and it is in ortho position. ये भी आप important लिखिए, ठीक है? OH है आपके पास कौन से position में? It is at ortho position to CH2. Then you have in the C structure, you have NO2. This is also in the ortho position, and in the D structure we have OH, but this is in the meta position. This is in the meta position. Okay. Now, if I have OH in the ortho position, then it is going to give you plus M, electron donation. If NO2 is there, that means it is going to be minus M. इसमें बताइए plus M या minus M? For the D case, if you have OH, it will be plus M or minus M. Tell me, guys. Plus M or minus M? Plus. What about others? Plus M or minus M? Nothing. For OH? Huh. Nothing will be there because OH is in the meta position, and meta position में क्या होता है? Mesomeric effect काम नहीं करता है. So here we are not going to write minus M or plus M, but inductive effect is going to work. Inductive effect में क्या होता है? Minus I. Okay, because oxygen is electronegative element, it is going to have minus I effect. So I will write minus I because it's at meta position. In meta position, mesomeric effect does not work. अच्छा, ये तो आपका बिल्कुल, this is neutral, ठीक है? इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है. Plus M, if you are going to have positive charge, तो positive charge को क्या चाहिए? Electron चाहिए या नहीं चाहिए? Tell me, guys. Just a second. एक second, let me reshare this thing. Tell me, guys. If you have positive charge, then does it require electron? Yeah, it does not require electron. Which will be stabilizing? Plus M stabilizing होगा? It requires electron. So plus M is going to be stabilizing. So it is going to stabilizing. Minus M is going to be unstabilizing, and minus जो भी आपके पास minus लगा हुआ है, that is going to be unstabilizing. ठीक है? And this is neutral. तो सबसे ज्यादा stable कौन होगा? B is the most stable. Then you have A, because it is neutral. इसमें unstable भी नहीं हो रहा है. It is not getting unstable. It is just neutral here. Okay, B, then A, and after that minus M is going to pull electron more than minus I. So उसके बाद आएगा आपके पास B case, which is highly unstable, and this is not very highly stable. This is having C. So this is the order. Please write this down. Done, everyone? लिख लिया सबने? Right, next, order of plus M. So highest electron
donation power is with CH2 negative, followed by NH negative, followed by O negative, followed by NH2, then you have OH. नहीं, एक सेकंड, NH2 के बाद आपके पास वो सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स आ जाते हैं, so you will have NHR, then you will have NR2, उसके बाद you are going to have OH, after OH you are going to have OR, sorry guys, just a second. Order of -1, CH2 positive, followed by NO2, followed by C triple bond N, carboxylic acid, ketone, then you have aldehyde. This is R here. R ठीक से लिखा है नहीं. This is R. Done everyone? Yes or no? Please tell me. सबने Yes, लिख लिया? Okay, right, next. Hyperconjugation. Write the statement first of all, then we'll understand what is hyperconjugation. Delocalization of pi bond. So delocalization of sigma CH bond. Sorry, delocalization of sigma CH bond. Delocalization of sigma CH bond electrons with pi bond or positive charge or free radical is called hyperconjugation. It's called hyperconjugation. देखिए, what are the necessary conditions? Necessary condition आप definition से ही लिख सकते हैं. You should have a sigma bond, ठीक है, CH वाला sigma bond होना चाहिए, okay, and then there should be a pi bond, positive charge or a free radical. उसके बाद you are going to write conditions for hyperconjugation.
Conditions for hyperconjugation. Please write with me. Number one condition. At least one sp2 hybridized carbon atom. At least one sp2 hybridized carbon atom should be present. Second, alpha carbon with respect to WRT with respect to the sp2 hybridized carbon atom should have at least one CH bond. Should have at least one CH bond. That is, there should be at least one alpha hydrogen. There should be at least one alpha hydrogen. Alpha का मतलब होता है adjacent. Okay, alpha means adjacent. So the adjacent carbon with respect to sp2 hybridized carbon atom should have at least one CH bond. Right, both of these conditions. If both of these conditions are there, then there will be hyperconjugation. Then everyone, you know, सबने लिख लिया, कंडीशंस लिख लिया सबने? Yes, sir. पहला काम है आप लोगों का आइडेंटिफाई करना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है? अब देखते हैं कितने लोगों को याद है। One carbon atom, two carbon atom, three carbon atom. One carbon atom, two carbon atom, three carbon atom. One carbon atom, two carbon atom, three carbon atom. One, two, three, four. You have to first of all identify the sp2 hybridized carbon atom. I will give you 3 minutes for this.
Hybridization was a part of chemical bonding and molecular structure. उसमें कार्बन का we had done explicitly, है ना? बताइए आप लोग, what are the carbon atoms that are sp2 hybridized? Send the answer whatever you have done till now. Devangi, Iram, Jania, please send the answers whatever you have done till now. हाँ इरम, नहीं हुआ एक भी? यस इरम, देवांगी व्हाट अबाउट यू? एक भी हुआ? यस देवांगी, सर याद नहीं आ रहा। याद ही नहीं आ रहा। व्हाट अबाउट यू इरम? No. नथिंग। देखिए केमिकल बॉन्डिंग में जाइए ना आप, पेज फ्लिप कीजिए, केमिकल बॉन्डिंग में जाइए, जहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पड़ी है वहां पे जाइए आप लोग, तब तो आएगा। ऐसे सिर्फ देखने से नहीं आएगा ना। स्टेरिक नंबर क्या होना चाहिए sp2 के लिए बताइए? स्टेरिक नंबर याद है Three. आप लोग को? हाँ sp2 के लिए कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, राइट? Yes, sir. है ना? चलिए अब एक बात बताइए, इस फर्स्ट कार्बन एटम में कितने हाइड्रोजन है बताइए? फर्स्ट कार्बन एटम हैज हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? ये जो पहला कार्बन एटम है ए स्ट्रक्चर में, कितने हाइड्रोजन है इसमें देवांगी? 2. याद नहीं है? हाँ बताइए, व्हाट इज द स्टेरिक नंबर फॉर दिस? स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ, क्या होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ? बोलिए, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर ना? हाँ या ना? Yes, sir. तो बताइए सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने हो जाएंगे फर्स्ट कार्बन एटम के लिए? इरम आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इरम No, sir. नहीं आ रहा आपको? स्टेरिक नंबर याद नहीं है आपको? अच्छा आप माइक ऑन नहीं। रखिए, ऐसा एक सेकंड माइक ऑन रखिए आप। क्या? यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम में कितने हाइड्रोजन होंगे वो पता है आपको या नहीं पता है आपको? हाँ वो पता। वो पता है, 2 होंगे। सेकंड कार्बन पे कितने होंगे बताइए? सेकंड कार्बन एटम में कितने हाइड्रोजन होंगे? 1, ठीक है, थर्ड में कितने होंगे? 2, थर्ड में फिर से देखिए बताइए कितने होंगे? हाँ इरम कैसे निकालते हैं?
नंबर ऑफ, देखिए ये सारी चीजें अगर आप लोग भूलने लगे तो फिर क्या फायदा। हाँ, थर्ड कार्ड कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं। I don't know. पेज पलटिए तब ना, पेज पलटिए, आई डोंट नो का मतलब ही नहीं है, पेज पलटिए, कहीं ना कहीं तो लिखा है ना हमने। आपने सवाल जब किए हैं तो आप लोग को नोट्स कम से कम अपना पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे है। इस तरह से सिलेबस होना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग पुरानी चीजों को रिवाइज करके नहीं रखिएगा, पुरानी चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, तो हम हमेशा वही सेम चीज पढ़ाते रह जाएंगे। ठीक है, या तो हम सीधा सीधा बता दें कौन से sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो आप लोग फिर एग्जाम में क्या कीजिएगा। एग्जाम में हम तो नहीं रहेंगे बताने के लिए, आपको पहचान में आना चाहिए कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज है, कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। दिस इज वेरी बैड गाइड। ठीक है, पुरानी चीजें आप लोग रिवाइज करते रहिए, ये सारी चीजें भूलने का कोई दुख ही नहीं बनता है। सी हियर एवरीवन, प्लीज आप लोग देखिए, ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज करके रखिए, ये सारी चीजें आप लोग भूलते ही जा रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे यू हैव 1, 2 and 3 sigma bonds. Carbon has 4 bonds. That is why it will not have any lone pair electron. तो सिग्मा कितने हमारे पास 3 हैं, लोन पेयर कितने हमारे पास 0 है, तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया 3। फर्स्ट कार्बन एटम इज sp2, सेकंड कार्बन एटम में भी सेम थिंग, इट इज sp2, थर्ड कार्बन एटम हैज 3 हाइड्रोजन। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स थे 3 के थर्ड कार्बन के पास, इट हैड ओनली 1 बॉन्ड, सो हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, देयर विल बी 3 हाइड्रोजन्स। स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा इसका, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी व्हाट sp3 hybridized, not sp2 hybridized. First carbon atom has 3 हाइड्रोजन्स, थर्ड कार्बन एटम हैज 3 हाइड्रोजन्स, sp3 सेकंड कार्बन एटम के पास देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट, इट हैज 2 bonds and 1 positive charge, so it is going to have only 1 hydrogen like this and a positive charge here. तो इसके पास this is sp2 hybridized. यहाँ पे you have second carbon atom which is sp2 hybridized. यहाँ पे you have the second carbon atom which is sp2 hybridized. Here you have the third carbon atom which is sp2 hybridized. लिखिए आप लोग, if there is a double bond sp2, एक डबल बॉन्ड है तो sp2, ठीक है। if there is a positive charge on carbon it is going to be sp2, if there is a free radical on carbon it is going to be sp2, ठीक है ना, या तो रट लीजिए इसको, लेकिन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे सवाल आएगा तो फिर नहीं बनेगा आप लोगों से। एंड ऑल ऑफ दीज कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि कुछ नया पढ़ा रहे हैं, आप लोग भूल जा रहे हैं, है ना, तो उस पर आप लोग को वर्क करने की जरूरत है। इस तरह चलते रहा ना तो फिर हम ऐसा पढ़ाएंगे आप लोगों को, सारा सिलेबस हो जाएगा, आप लोगों को कुछ नहीं आएगा, फिर बार बार हमको वापस वहीं जाना पड़ता है। लिख लिया, जल्दी बताइए हाँ या ना, आंसर भी नहीं करते, जल्दी जल्दी लिख लिया आप लोगों ने। देवांगी, इरम, जानिया, टेल मी, तारीफ तो है ही Yes. नहीं यहाँ। Yes, sir. ओके, राइट, नेक्स्ट। Identify alpha hydrogen with respect to sp2 carbon. sp2 तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, अब बताइए अल्फा कार्बन कौन कौन से हैं यहाँ पे। फर्स्ट कार्बन एटम, फर्स्ट स्ट्रक्चर टेल मी, लिखिए मत अभी प्लीज, कोई मत लिखिएगा, पहले हम बताइए कौन सा है, विच इज द अल्फा कार्बन, विच इज द एडजेसेंट कार्बन टू sp2 ए में। अरे जल्दी बताइए भाई, 1 2 3 कौन सा है इसमें, विच इज द sp2 कार्बन, टेल मी गाइस, विच इज द sp2 कार्बन। 1. 1 है, और कौन है sp2, सारे sp2 बताइए ना, 1 है और 1 or 2. 1 and 2 आर sp2 कार्बन। अच्छा, तो 1 अगर sp2 कार्बन एटम है, इसके रिस्पेक्ट में तो आप नहीं देखिएगा, राइट, सो यू हैव 2 इज द sp2 कार्बन एटम,
1 के एडजेसेंट में तो sp2 ही है, तो उसको मत देखिए। देन यू हैव सेकंड कार्बन एटम। सेकंड कार्बन एटम के बाद थर्ड कार्बन एटम क्या हो जाएगा आपका? दिस विल बी अल्फा, यस और नॉट, टेल मी गाइस। Yes, sir. थर्ड विल बी अल्फा, है ना? अच्छा, अब इस अल्फा में कितने हाइड्रोजन से बताइए? थर्ड कार्बन हैज हाउ मेनी हाइड्रोजन? इसी वजह से इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ हाइड्रोजन पता करना। सेकंड में बताइए, इन द बी स्ट्रक्चर व्हाट इज द sp2 कार्बन? इरम आपको जवाब नहीं देना है, जानिए आपको जवाब नहीं देना है। माइक क्यों ऑफ है आप लोगों का? कीप योर माइक ऑन, इरम एंड जानिया। इरम, टेल मी इन द बी स्ट्रक्चर व्हाट इज द sp2 कार्बन? Second one. सेकंड वन के एडजेसेंट कौन कौन से हैं? कीप योर माइक ऑन इरम। आपको 10 बार क्यों बोलना पड़ता है ये सारी चीजें जब आपसे एक First and सवाल कर रहे third. हैं? फर्स्ट एंड थर्ड। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन द फर्स्ट वन? 3. हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन द सेकंड, इन द थर्ड वन? 3. The total number of alpha hydrogen will be? 6. What about in this case? This is free radical. Which is the sp2 carbon? Second. Total number of alpha hydrogen? 6. यहाँ पे कौन सा है? Which Second. is the sp2? Okay. Total number of alpha hydrogen? 9. What is the sp2 here? sp2 कौन सा है? First and second. No. First and second कैसे है? First में कितने हाइड्रोजन से बताइए इरम? How many hydrogens in the 3. first one? What is the steric number for this? 4 minus 1, which is 3. 4 माइनस नहीं, स्टेरिक नंबर पूछ रहे हैं हम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं पूछ रहे हैं हम। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, स्टेरिक नंबर क्या होगा इसका? 1. तुक्का मार रही है? नहीं, 1. ढूंढिए, नहीं ढूंढिए, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला ढूंढिए क्या है, ढूंढिए और हमको भेजिए व्हाट्सएप में। नो देवांगी, सबसे पहले चूज कीजिए कि आपके पास वहां पे अल्फा कार्बन कौन है, सिर्फ एडजेसेंट वाला होता है, ठीक है? आइडेंटिफाई द sp2 कार्बन देवांगी एंड देन सी व्हाट इज द एडजेसेंट कार्बन एटम, वही अल्फा है। सारे अल्फा नहीं होते हैं, जो एडजेसेंट है। Sir, second is the alpha carbon. वो हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे, हमने क्या पूछा आपसे बताइए इरम? Steric. हाँ, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला बताइए आप हमको। That's sigma plus lone pair, right? ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन का स्टेरिक नंबर क्या होगा? फर्स्ट कार्बन एटम कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 3 bonds. टोटल बॉन्ड्स 3 बॉन्ड ही है, फिर से देखिए 3 लकीर दिख रहा है उससे निकलते हुए, कितने लकीरें दिख रही है निकलते हुए? इरम, हाउ मेनी लाइंस कैन यू सी फ्रॉम द फर्स्ट वन? 4. अब बताइए आप ये चीज कैसे सही होगा आपका? आप पहले 3 बोल रही फिर 4 बोल रही हैं। 4 कंफर्म इरम? 4 पक्का है ना इरम? Yes, sir. 4. Keep your mic on. What will be the hybridization if the steric number is 4? स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? नोटबुक को आप
पीछे देखिए केमिकल बॉन्डिंग में हमने टेबल बनवाया हुआ, वहां पे दिया हुआ है। यस सरम, Iram, tell me what will be the hybridization if steric number is 4? sp3 और आप क्या बोल रही थी? फर्स्ट कार्बन sp2 है, आपने बोला था। नहीं सर, मैंने कहा था कि एडजेसेंट फर्स्ट एंड सेकंड है, थर्ड वाला ही ऐसा कुछ। हमने तो sp2 पूछा था कौन सा है, तो आप बोल रही थी वन फर्स्ट है। व्हाट इज sp2? टेल मी। फिर यहाँ पे sp2 कौन सा है? थर्ड वन। थर्ड वन। और उसके एडजेसेंट में कौन सा है? व्हिच कार्बन इज एडजेसेंट टू sp2? सेकंड वन। ओनली सेकंड वन, ठीक है। तीसरा आपका एडजेसेंट नहीं है। सो द सेकंड वन इज द अल्फा कार्बन। सेकंड वन इज द अल्फा कार्बन। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू हाउ मच? सेकंड कार्बन में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? टेल मी। 2। करेक्ट, ठीक है। नाउ once you have identified these things, please see. Now I'm going to show you guys a video, इससे आपको पता लगेगा what is hyperconjugation. Is it visible? दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Okay. Now please see, there are two cases here. Let me see annotation. Yeah. This is the carbon atom. These are the hydrogens. Okay, एक पीछे स्क्रीन के और एक स्क्रीन से आगे आ रहा है. Here also we have a carbon atom with a positive charge, but it is attached to another carbon atom with 1 hydrogen, 2 hydrogen, and 3 hydrogen that is behind the thing. चलिए, यहाँ पे we have only 1 carbon. This is also sp2 hybridized. Yes or no? Tell me. Because 3 आपको दिख रहे हैं. You have 3 sigma bonds. 3 sigma bonds. That means it is going to be what? sp coordination. Sorry, steric number is going to be 3. Hybridization is going to be sp2. Tell me in this first and second, which is sp2 hybridized? First carbon या second carbon? कौन सा sp2 hybridized है? Tell me guys. Which is sp2 hybridized? 1 or 2? 1. हिरम आपको दिख रहा है? Yes. Okay, 1 or 2. Which is sp2 hybridized? The first one is sp2 hybridized. ठीक है. 1 is sp2 hybridized. Number of alpha carbon कितने हो जाएंगे स्ट्रक्चर के लिए? So number of alpha hydrogen कितने हो जाएंगे? What will be the number of alpha hydrogen? 2. ना, 3 हो गए ना. ये sp2 है. This is the alpha carbon. ये alpha carbon है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है. Can you see that? Yes, sir. ठीक है, ध्यान से. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल sp2, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इट हैज, इट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. नाउ हियर वी हैव ड्रॉन द orbitals of the only empty orbitals. p orbital is empty in both of the cases. अब you will see the orbital of a second. See, this is the sp3 hybrid orbital. ठीक है ना. sp3 hybrid orbital बोलिए इसको. या फिर you can also say that this is what? This is the CH sigma bonding molecular orbital. ठीक है. This is the CH sigma bonding molecular orbital. Here you are going to have 2 electrons because in the bond is made by sharing of equal number of electrons, and one bond is made by the sharing of 2 electrons. Is it clear till here? Yes or no? Please tell me. Yes or no? Please tell me guys. Is it clear till here? नहीं, अरे हाँ ना, जो भी है जल्दी बताइए ना. नहीं है तो फिर से समझाएंगे हम. देवांगी, इरम, जानिया, टेल मी. Is it clear till here? Yes or no? Yes, sir. Iram, what about you? Yes. ठीक है. So here you have the vacant p orbital and you have adjacent CH bond. Now these electrons will be moving. Okay, these electrons will be moving here. It will slowly be moving. Okay, see,
The electrons will be moving always, right? And since here you have a positive charge, these electrons can move towards this positive charge also sometimes. Can you see that happening? Yes or no? Electrons are negatively charged. A carbon pe positive hai to attract hoga, and if it is going to get attracted, then it is going to shift towards this vacant p orbital. Okay. So sometimes you will have some electron density on the p orbital also, and this is with one CH bond. Since you have three CH bond, all of those CH bond will be able to give some electron density towards that carbon atom. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Now, if you are giving electrons to a positively charged, that positive charge is going to get down. That positive charge is going to decrease. And when the positive charge is going to decrease, stability क्या होगा बताइए? Increase या decrease? Charge decrease होता है, stability? Tell me. Increase. हाँ, charge decrease होता है तो stability increase होता है. Okay, so this is how hyperconjugation stabilizes the carbocation. It stabilizes the alkene, and it also stabilizes the free radical. Okay, so please write. If you have suppose here you have having the three hydrogens, then you have carbon atom, and this is the vacant p orbital. This vacant p orbital has two hydrogens. Sorry, this vacant p orbital carbon atom, it has two hydrogens like this, and it has a positive charge. This is positively charged carbon atom. Now the electron density that is present in this CH, it sometimes travels like this. Leading to formation of CH2. There will be a pi bond like this, and here also you'll have CH2, and here you will have H plus ion. Okay, H plus ion. So this type of resonance, this is also a type of resonance, because what is happening? Electron movement is happening, and there is pi bond involved here. Okay, there is a movement of electron, but from sigma, and it is converting to pi. So you can see that this is one hyperconjugating structure, and if this CH bond takes part, this will be having another hyperconjugating structure, and if you have this CH bond taking part, then there will be another hyperconjugating structure. That means, please write. There are three alpha hydrogens, hence three hyperconjugating structure are possible. Okay, so all of these CH bond, they are what are they doing? They are giving some electron density towards this C positive, towards this carbocation. And whenever you give electron density towards carbocation, electron deficient species, then you are going to stabilize the species. So please write stability is directly proportional to number of hyperconjugating structures. Which in turn is directly proportional to number of alpha hydrogen. Number of alpha hydrogen. Also right, stability of alkenes, carbocation, and free radical. Is determined by hyperconjugation. Okay, that is why if you have CH3 positive, this is having 0 alpha hydrogen. Then you have carbon, CH2 positive, and CH3. This has 3 alpha hydrogen, right? sp2. And if you have CH3 carbon with another CH3 and H, the positive charge, this carbon atom, it is having 6 alpha hydrogen. Then you have H3 carbon
carbon CH3 and CH